Good day everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News at 9:30, your source for exclusive news and entertainment. This is Pernida bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. Prior to the 16th India-Europe Summit, Defence Minister Rajnath Singh and the three service chiefs met with high-level Europe team headed by Europe High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas. The relationship will provide tangible outcomes in maritime security, cyber security, counter-terrorism and multilateral cooperation. According to Kallas, who referred deal as a milestone that represents growing confidence and cooperation. There is strong impetus for tighter cooperation with India, and we are grabbing it, he stated on X, emphasizing that the alliance will promote both bilateral and multilateral defense cooperation. Rajnath Singh emphasized that India-Europe relations are based on common ideal of democracy, pluralism, federalism, and the rule of law. He called the collaboration between technology and defense trust in action. According to Europe officials, such partnerships are a key pillar of the bloc strategic compass, adopted in 2022, which aims to deepen engagement with non-Europe partners after South Korea and Japan. India is now the third Asian nation to have such an agreement. कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Speaking via video conference at India Energy Week 2026, which was attended by delegates from about 125 nations in Goa, Prime Minister Modi stated the nation energy industry offer a wide range of investment prospects along the energy value chain. He mentioned the Samudra Manthan mission, a deep sea exploration project, and emphasized how India has greatly expanded its exploration industry. India wants to increase oil and gas sector investment to 100 million by the end of this decade. The Prime Minister emphasized that the exploration sector has undergone a number of reforms, such as lowering the no-go area, and recommendations from earlier India Energy Week event have been integrated into Act and rules. He confirmed that business that engage in exploration industry will undoubtedly witness more profits. He also stated India has a huge refining capacity, is now ranked second in the world, is now to overtake all other nations in this regard. The ongoing efforts are being made to increase the nation refining capacity, which is now stands about to 260 million metric tons annually to 300 metric tons annually. करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता
ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। Odisha Janata Congress Party. The name has been finalized after the discussion with supporters. A decision was made on Monday. Opinions have been received on the registration of the party. The formal name will be announced after the party formation process is completed by March. It reported that a decision was taken after discussion with his supporters, in which discussion was taken on the registration of the party. The formal announcement will be made after the entire process of party formation is completed by next month. After leaving the Congress party, Mokim is hoping to form a new party with the youth. 3 youth leaders of major parties will join the party and thousands of youth leaders will make an announcement in next youth meeting. After the exit survey, Mokim has focused more on coastal district. नहीं पूर्णच्छेद करने बर्तमान जे कार्यक्रम चली ये प्रक्रिया चली आम या भर गोटे महिला कनक्लेव करुचे मान आलोचना कर विभिन्न वर्ग लोक सहित आलोचना कर एजेंडा कौन हम कौन समस्या अच्छी नुआ दल किपरि भाव नेब मुख्य आलोचना चली या भर आमर जो मैंने सहयोगी अच्छा आलोचना माध्यम जोड़ाए ना सामना को ओडिशा जनता कांग्रेस ओडिशा लोक कांग्रेस आम भर निष्पत्ति करूँ क्या आम जीव बाकी सब प्रक्रिया सरिकी रेजिस्ट्रेशन सरला टेंटेटिवली मार्च शेष सप्ताह बेलू आम दल को फ्लोर को आनू लोक सम्मुख अन्य दलर किसी वरिष्ठ नेता अच्छा जो सहित अपना आलोचना अन्य दलर बहुत व्यक्ति सहित आम आलोचना करुँ अन्य दल मैंने आम पाखे बर्तमान 3 दल अच्छी गोटे कांग्रेस गोटे भारतीय जनता पार्टी गोटे विजु जनता दल मुख्यतः विजु जनता दल में जो मैंने अच्छा भविष्य से देखिपार ना जो मैंने युव नेतृत्व से जोगाजोग अच्छा पूरा सब आम सम्मुख को आनबू ये दल आम लंच कर कांग्रेस विधायिका अच्छी से कांग्रेस कम कर कौन संपर्क नहीं जदि से चाहिए जे आपन संगे काम करिया पे से चाहि परिबनी से विधायिका अच्छी सेठी तेणु ताकू ता पदरुद्ध होई जीवो से कांग्रेस सहित काम कर कटक सहरवासी ताकू निर्वाचित करछंती तेणु कटक सहर सेवा से चर्चा हो जे युवा पीढ़ी के अपन नेतृत्व निश्चित रूप में यंग ओडिशा देखा चाहूँ युवक मैंने ओडिशार दायित्व नेबे ओडिशा काम करेंगे और एक वैप्लविक परिवर्तन करा ओडिया आवश्यकता अच्छी ताकि नूतन दल ग्रहण करेंगे ओडिशा कैंद्रिक दल होची Following a statewide strike called by bank staff union demanding the adoption of 5-day work week, public sector banking service across India are anticipated to be affected on Tuesday, January 27. The United Forum of Bank Union, an umbrella organization that represents bank officers and staff, has called for the strike. The demand for 2 weekly holidays is heart of the movement, and unions want bank to work 5-day a week. According to union leader, the strike call was made after discussion with the Chief Labour Commissioner on January 23 were unsuccessful. Customers are likely to experience inconvenience if the strike process because financial services would be unavailable for 3 days in a row. Due to the week-long holiday on Sunday and Republic Day on Monday, banks were already closed. Nearly 8 lakh bank employees and officers are anticipated to take part in the agitation, according to union estimates. According to the union, the walkout is anticipated to impact public sector bank as well as private, foreign, rural and cooperative banks.
For a long time, bank workers have been advocating for a 5-day work week. For the previous 2 years, the government and the Indian Bank Association have been considering the proposal, but no final decision has been made. Union have agreed to add 40 minutes to daily working hour from Monday through Friday as a part of the proposal, in return for making every Saturday a holiday. Republic Day makes January 26 as a national holiday, and a bank union have designated January 27 as a strike day. समझौते के तहत आईबीए के द्वारा 2015 में इस स्वीकारा, लेकिन हाफ स्वीकार किया, उसे 2 सैटरडेज ऑफ करे, हमारा सेकंड और 4th सैटरडे को ऑफ किया, बाकी के 3 दिन हमने कहा जो कि पहले हाफ डे हुआ करता था हम पूरे दिन काम करेंगे। इसके बाद से निरंतर हम ये डिमांड रख रहे हैं कि हमारे सारे सैटरडेज को ऑफ कर दिया जाए। आज आप देखेंगे किस प्रकार से, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेबी हो, मनी मार्केट हो, या फिर आप विदेश के बैंकों के बारे में बात करें, सारे बैंक सप्ताह में 5 दिन ही काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारी ये डिमांड बहुत ही लंबित हो चुकी है। बड़े लंबे समय से हम इसके ऊपर भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को हमसे ये स्वीकार किया, एक MOU साइन किया। उसमें इन्होंने कहा कि आपके ये जो 5 डेज हमें करना है, सारे सैटरडेज को ऑफ करना है, ये हम तत्काल रूप से कर देंगे। इसके बाद हमारे साथ बाइपार्टाइट सेटलमेंट और हमारा जॉइंट नोट साइन किया 8 मार्च 2024 को। 8 मार्च 2024 को उन्होंने लिखित समझौता किया हमसे कि आपके सारे सैटरडेज को हम ऑफ कर देंगे। लेकिन देखिए, आज दुर्भाग्य ये है, लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोग निरंतर भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमने पहले भी स्ट्राइक नोटिस दिया था। हमने जब लास्ट स्ट्राइक नोटिस दिया था, हमने उसको पिछले वर्ष दिया था मार्च में करने के लिए। 23-24 मार्च को हम लोग ये करना चाह रहे थे। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आप थोड़े समय तक इंतजार करिए, हम इसको आपको करके देंगे। उस समय हमारी CLC के साथ जो कंसलेशन मीटिंग थी, उस कंसलेशन मीटिंग के अंदर ये बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, ये बहुत लंबे समय से लंबित डिमांड है और इसको हम जरूर से कर देंगे। लेकिन उस बात को भी अब लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है, अभी तक भारत सरकार इसे करने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार हमको पूर्णतः से इसमें धोखा दे रही है, हमको हमारी जो वाजिब लेजिटिमेट डिमांड है उससे हमें पीछे कर रही है। Tomorrow from 6 am to 2 pm, the Navanirman Krushak Sangathan has called for an 8-hour ban in Odisha to protest alleged irregularities in paddy procurement, the imposition of heavy fines under the pollution under control certificate system, arbitrary action by the Tata Power over electricity tariffs. The ban call was sharply denounced by Bharatiya Janata Party, which called it a false farmers movement. The Navanirman Krushak Sangathan lacks grassroots support, according to BJP spokesperson Manoj Mahapatra, and the Congress is exploiting the farmer organization as a stand-in because it is unable to mobilize people on its own. नवनिर्माण कृषक संगठन जो बंद डाकरा देइछि काली जनवरी 28 तारिख सकाळ 6 ରୁ 2टा पर्यंत एथिरे सीपीआई सीपीएम ठार आरंभ करी आपणकर कांग्रेस याको भक्तदास काली समर्थन करछंती एवं मुख्य कथा होची समर्थन बढ़ी चलछि गोटे पटरे आ गोटे साइड सरकार डरी चलछंती। सरकार एभली डरुचंती 2 दिन हला जो प्रचार चलीछि नवनिर्माण युव छात्र संगठन तरफ भुवनेश्वर तले प्रचार आभरण भुवनेश्वर कटक रे ट्विन सिटी रे 2 दिन प्रचार काली मात्र द्वितीय दिन प्रचार रे सरकार एमिति डरले पिला माने बाइक कार रे जाउछंती गोटे इश्यू को नै करी प्रचार करी जाउछंती जे भाई काली केमिति समस्त निवेदन करछंती बंद रखिया पई किए टिके मुंडो काढी देला ताकू गोटे सरकारी चैनल रे जे ये स्टंट करूछंती करी करी ताको अरेस्ट करवा माने एपरि की घरे पहुंचवा आज से गाड़ी उठै नवा ताको फाइन 5000 नहीं पकई देवा एवं ताको ताको मोबाइल छड़े की ताको नहीं पहुंचाई देवा लाइसेंस भी नहीं जीवा ये जो दमनला घर उठे नवा माने गाड़ी के हम लोक को ता अर्थ ये दमनला सरकार आरंभ कले जे जदि युवक मान को डरै दिया जीवो ताले आंदोलन रोकी जीवो एवं ये बंद रे निश्चित भाव मान को विफल कर दिया जीवो किंतु सरकार चेती जानतो समर्थन बढ़ी चलची साधारण जनता ठार आरंभ करी चाषी मूलिया युवक छात्र महिला विभिन्न गणतंत्र प्रेमी संगठन एवं तत्सहित ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो माने सीपीआई सीपीएम आरंभ करी कांग्रेस काली भक्तदास समर्थन देइचंती तेणु ये जो समर्थन बढ़ी चली एथिरे सरकार चेतीबे नचे सरकार आगामी 4 वर्ष रे तांकर कवर खोलिबे। अतीत आम देखी नवनिर्माण कृषक संगठन एयरपोर्ट रु
गोटे फ्लाइट धरिकी जाइथिले गोटे बीआरएस करथिले एबे आसिकी फेर आसीचंदी वर्तमान आंदोलन करिया पे आंदोलन करिवा काहाकू मना नाही किंतु प्रत्येक प्रोफेशन ने देखिथिबे असली और नकली समस्त अछंती इवन आपण सांबादिकता प्रोफेशन ने मध्ये देखिबे किछि असली सांबादिक अछंती किछि नकली सांबादिक अछंती प्रत्येक प्रोफेशन ने एमाने जोचंदी होउचंदी जो माने जहा जहा ना धरिले एमाने होउचंदी नकली चासी एमाने प्रकृत चासी नुहंती ना एमाने हळ करि परिबे ना बाहुंगी बेकरे पकई परिबे ना जोत जानिचंती ना जुहाली जानिचंती ना लंगळ जानिचंती ना एसबु किछि धान बाळुंगा भी एमाने ठीक रे कहि परिबे अतीत रे आपण देखिथिबे पश्चिम ओडिसा रे कोन होतला जे चासी सर्वस्वान एवं मालेमाल को माने होतले दलाल आ मिलर आज से कथा नाही मोहन माझी माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी सरकार रे जेतबे असल चासी जो माने अछंती से माने खुशी रे अछंती गोटे चासी परिवार दीर्घ 2 वर्ष धरिकी सर्वनिम्न 50,000 टंका रु 1.5 लाख 2 लाख टंका पर्यंत एक्स्ट्रा बेनिफिट पाइछंती सेति कोनोसी चासी ए आंदोलन नांती किछि नकली चासी जो मानकर प्रोफेशन होची निजर संस्था बंचेकी रखिबा जो माने मिलर को सहाय्य करंती जो माने दलाली करंती मिलर मानक पाखरे सेही माने आज एभली आंदोलन करछंती आ तांकु जे समर्थन दउछंती जो कांग्रेस दल कथा कहले कांग्रेस दलर वर्तमान आ नाही फेस वैल्यू नाही कि कांग्रेस दल कोनोसी आंदोलन डाकरा दबा अवस्था रे नाही कांग्रेस दल जेहेतु चासी विरोधी सेति पय कांग्रेस वर्तमान आंक पछरे नाउ होची ये भली हजार संस्था नाउ हेले किछि लाभ नाही लोके जानिचंदी माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं आम सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार चासी मानक पय कोन करि इनपुट सब्सिडी 800 टंका एवं गत वर्ष रेकर्ड परिमाणर धान संग्रह होइछि एवं धान उपरे लोके वर्तमान ओडिसा रे चासी निर्भरशील होइचंती धान गोटे प्रॉफिटेबल चाष होई परछि सेटा आज मोहन माझी सेटा आज ए सुजोग सृष्टि होई परछि ओडिसा बंद ताले सफल होबनी कि प्रभाव रहियो ओडिसा मु कोन कहली किछि नकली माने चासी नुहंती से माने केवल तांको प्रोफेशन तांको संस्थाटा को बंचेया पय से मझिरे जाइथिले को संस्था किनिया पय आपण देखिचंदी हैदराबाद जाइथिले जेतले बीआरएस बुडी गला फेर आसिले कहले आमे गोटे आ गोटे संस्था हमर रखिछु ये रखिचंदी रजिस्टर्ड संस्था किछि आर किछि मूल्य होइनो माने असल चासी जे जानिबे प्रभाव कोठु आसिला माने कहली माने चासी नुहंती नकली चासी जदी जते मिसिले चाषों पर कौन प्रभाव पड़ो चाषी खुशी अच्छा कृषक जे ओरिजिनल कृषक से माने खुशी अच्छा कृषि और कृषक कौन उन्नति होता समस्त हृदयंगम कर Prabhati Parida, the Deputy Chief Minister of Odisha, announced today that the government approved price for uniform and shoes given to Anganwadi children under the Malati Devi Par Vidyalaya Paridhan Yojana had increased. The updated rates were announced during a Women and Child Development Department program, significant and increasing state spending intent to raise the caliber of uniform provided to preschoolers enrolled in Anganwadi centers. The price of boy uniform increased from Rs 100 to 175 in accordance with the received budget. The sum has been raised from 150 to 250 for girls. Additionally, the amount allocated for footwear has been increased from Rs 100 to 150 per child. Using updated rate, the government would now spend more on shoes and school uniform for Anganwadi kids in Odisha. According to official, the increased funding would be used for early childhood education at Anganwadi centers under the Malati Devi Par Vidyalaya Paridhan Yojana. The decision was made to guarantee that kids receive higher quality uniform in keeping with the goal of the state preschool education initiative. The program main goal is to give kids access to basic facilities and early learning support before they start formal schooling. Anganwadi centers are essential for providing nutrition and preschool education throughout the state, especially in low-income rural and urban communities. It is anticipated the current Anganwadi framework will be used to apply the updated uniform and footwear prices. मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना अधीन अंगनवाड़ी शिशु मानक पई जो पोशाक और शीतकालीन सामग्री मूल्य रे वृद्धि होती बालक मानकर यूनिफॉर्म जोटा आम 100 टंका दौलू एवं 175 टंका दबू बालिका मानकर यूनिफॉर्म जोटा 150 टंका थिला सेटा 225 टंका दबू जोता और मोजा पई जोटा आगु 100 टंका दौलू एवं 150 टंका दबू स्वेटर जोटा 150 टंका दौलू ताकू 200 टंका दबू
एई एबेठू ही लागू माने एई वर्ष जे मन किनिबा आमे एई जो 2026-27 एथिरे प्राय आमे जो 26-27 आर्थिक वर्षरू आरंभ हो तामाने एई वर्ष ठू जोटा प्रोक्योर होबो सेटारे आरंभ होबो एक्जेक्टली आमे 14,27,00,000 74,224 अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोटा 14.76 लाख स्टूडेंट माने पाइबो। The first phase of the census in Odisha started from April. The census will be conducted into 2 phases. The second phase will begin from February 2027. The house listing exercise will be conducted in all states and union territories of the country from April 1 to September 30. There will also be an opinion for self-enumeration for fortnight just before the house listing begins. About 1 lakh census enumerators will be appointed across the state for this exercise. One enumerator will be given the responsibility about 200 households. One observer will supervise the work of 6 enumerators. Each enumerator will get a financial incentive of 25,000 for their services. Concerned about alleged overcharging of tourists and potential tax evasion, police GST official launched a massive enforcement campaign today, conducting extensive raid on tour and travel agency operating along the sea beach in Odisha Puri district to confirm complaints with licensing standard and tax regulation. Official examined whether reservations were being made in accordance with authorized tariff and whether tourists were being charged more than the allowed amount for sitting exclusion of Bhubaneswar, Konark and Satapada. The examination also looked at whether organizations were providing tourists with accurate invoices for the service they had received. Visitors to Puri frequently used local tour and travel service for transportation to neighboring locations including the Lingaraj temple in Bhubaneswar, Nandankanan Zoological Park, Satapada, Konark. During trip, more than 62 travel agencies were examined, encompassing location for the Puri sea beach to the lighthouse, sea beach and another adjacent cities. Several agencies apparently closed their offices after the raid started. Agencies that were discovered to be operating without a legal trade license were advised to apply right away, following which their offices might be sealed. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi inaugurated the Adivasi Mela 2026 at the Adivasi Exhibition Ground in Bhubaneswar. He reaffirmed the government commitment to resolving the long-standing problem of the state tribal communities and urged them to become educated, informed and conscious of their rights. He stated that the state government has given understanding problem tribal communities confront and coming up with workable solution top priority. Majhi emphasized his personal connection to tribal issues, saying that no one knows tribal difficulties better than those who have personally experienced them. Over the past 1.5 years, our government has been making constant effort to solve this concern and work for the welfare of tribal communities. He said the Shahid Madho Singh Hata Kharcha Yojana was created to give tribal people financial support and better livelihood prospects. According to Chief Minister Mohan Majhi, the goal is to provide indigenous people with sustainable livelihoods and financial support. He continued promotion of tribal goods. Majhi encouraged people to utilize and support genuine goods created by tribal craftspeople, which are on exhibit at the Adivasi Mela. He expressed confidence that this year trade volume will beat prior records, stating that the fair generated commerce 9 crore last year. तेबे यह प्रत्यय हुए जे ओडिशार मूल आदिवासी थिले मुख्यतः जनजाति संप्रदाय आमर जगन्नाथ संस्कृतिर मूल हेउछंती प्रभु नीलमाधव एवं तांको पूजा करुवा सबर राजा आमर आदिवासी राजा स्वयं विश्वाबसु प्रभु नीलमाधव को प्रतिष्ठा करी तांको से पूजा करुथिले सही भाव में रामायण भी प्रभु श्रीरामचंद्र दंडकारण्य विचरण कर प्रमाण आमको विभिन्न स्रोतर मिली थाए यही भावना अमूलक नुहे कारण आज भी ओडिशा जनसंख्यार प्राय 1/4
ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ଏହା କହିବାର ଆଦୌ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଜନଜାତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବିକ୍ରି କରିବା ବେପାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାର ଚାହିଦା ଆଜି ତାର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବି ଯାହାର ରହିଛି ସେଭଳି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ବି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ତାକୁ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିକିନା କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ କେମିତି ରହିବ ତା ପାଇଁ ବି ଆଜି ଏ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଠି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ଘର କେମିତି ରହୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ବି ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଆଜି ଏଠି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆମ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ କେମିତି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବି ଆମ ବିଭାଗ ଅନୁସୂଚିତ जनजाति अनुसूचित जाति उन्नयन एवं संख्यालघु पछुआ वर्ग कल्याण विभाग ये संपूर्ण भाव में आदिवासी उत्थान आज कार्य करी आसुछि। Bollywood actor Shahrukh Khan has formally revealed the release date of his next movie King. Is an announcement video that is full of impact. The actor said the King will roar into theaters on December 24, 2026 and shared eye-catching images from the movie on social media. The announcement video opening image showed the bold title roar against a striking background. The powerful phrase "This Christmas terror wears the crown" appear in another scene, further hinting at the film bigger than life scope and adding to its intrigue. In the video, Shahrukh Khan is seen in extremely dominance, with the rugged look in white shirt and face splashed in the blood. Cold wave continue in some parts of interior and western Odisha of the state. Minimum temperature recorded at 4.8 degrees Celsius in G. Udaygiri. On the other hand, night temperature has increased in coastal Odisha. Night temperature will start increasing gradually in the state from tomorrow. Night temperature may increase by 2 to 3 degrees in the next 4 days. Fog will appear in the capital, its surrounding area from tomorrow morning. According to Meteorological Department estimates, the maximum temperature during the day will be 32 degrees and the minimum night temperature will be 14 degrees. That's all for now. Stay tuned for more updates. Thank you.